आशीर्वाद का बैठक है पाठशाला। अच्छा सर, यूट्यूब पर ये ब्रॉडकास्ट हो रहा है क्या सर, लाइव? हो गया हो गया हो गया। कौन से चैनल पर सर? लिंक शेयर कर दो। NFB NFB। वो लिंक भी बाद में आ जाएगा ना वो। अब जी बोलो मत, हो गया, यूट्यूब पर हो गया। तो प्रदीप स्टार्ट करें। सर, एक मेरा निवेदन रहेगा कि आप लॉक कर दें म्यूट वाला, ताकि जो कोई बीच में लॉक ना कर पाए सर। हाँ वो तो होगा ही। जी प्रदीप जी सर, बस 1 मिनट चल रहा है, प्रोसेस में ही है, अभी बता रहा हूँ। हमारे पास तो आ गया कि हो गया। सर शुरू शुरू करिए, हो गया। चलिए, सबको म्यूट कर दीजिए। जी सर, मैं कर देता हूँ सबको। So friends, we are in the second presentation on the disability assessment guidelines. As all of you would remember, in the last discussion on the previous Sunday, I had given you a background of the provisions of the Act and the relevance of the guidelines for assessment of disability. In order to be on the same understanding and line, it is necessary to start the discussion by just giving you a brief background, a summarized background, what we discussed on Sunday, and then proceed to discuss with the guidelines in detail. दोस्तों, पिछले बार संडे को हमने, पिछले रविवार को हमने जो डिस्कशन की, चर्चा की, और उसमें हमने आपको एक बैकग्राउंड दिया कि डिसेबिलिटी असेसमेंट गाइडलाइंस से संबंधित क्या प्रोविजंस एक्ट में है, क्यों ये डिसेबिलिटी के असेसमेंट गाइडलाइंस की आवश्यकता है, और इस पर क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, और इसके रिवीजन की आवश्यकता क्यों हुई। लेकिन फिर भी, ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे और चर्चा एक कंटिन्यूअस सीरीज में चलती रहे, और हम सब, आप सब एक बैकग्राउंड की अंडरस्टैंडिंग लेकर आगे बढ़ें, तो डिसेबिलिटी असेसमेंट, रिवाइज डिसेबिलिटी असेसमेंट गाइडलाइंस पर आपसे चर्चा करने से पूर्व एक बड़ा संक्षिप्त बैकग्राउंड जो मैंने संडे को दिया था, उसका संक्षिप्त एक प्रेजेंटेशन आपको दूंगा, और उसके बाद हम गाइडलाइंस पर आएंगे। You would all remember that I had on the previous Sunday informed you that the disability certification is the first step towards the towards the inclusion for consideration for availing the benefit under the Act. And in this regard, Section 56 of the Act is important, which provides for the certification of disability. And the other provisions which are relevant are the definitions of disability. In this, I
reminded you of three definitions. One, the definition of persons with benchmark disability. The other, definition of a specified disability. And third, definitions of respective categories of disability as contained in the schedule to the Act. In that, I reminded you that the definition of persons with benchmark disabilities is as assigned in the Act is that all persons covered within the definition of with any or more of the specified disabilities will be covered under the definition of persons with benchmark disabilities. Specified disabilities has been defined in the Act by saying that all specified disabilities which are defined in the schedule. And in the schedule, there are 21 categories of disabilities which have been defined separately. And they have been defined in, if I may say so, these specified disabilities are in three broad categories. One, physical disability. Second, sensory disabilities such as visual impairment, hearing impairment. Third, intellectual disability such as mental illness, mental retardation, and so on and so forth. And each of the 21 categories of specified disabilities have been defined separately under the Act. Now, therefore, in order to get or avail the benefit under the Act, the threshold is that you should be certified as a person with a given specified disability. And who will give that certification is a medical board, of which chief medical officer or civil surgeon, or as the case may be, will be the chairman. Now, I had also referred to the rules relating to procedure for issuance of disability certificates. And in that, I reminded you that rules 17 and 18 are important. 17 deals with the application for disability certification, and 18 deals with the procedure for issuance of, or deals with the procedure of certification. Then I also referred to three forms of disability certification which are part of the rules. Those are form number 5, form number 6, form number 7. Form number 5 is with respect to physical disability and visual impairment. Form number 6 deals with the issuance with the certificate of multiple disability. And form number 7 deals with other categories of certificate with the certification of other categories of disabilities not included in form number 5 and form number 6. I have also highlighted that if one looks at rule 18 and form number 5,
it is very apparent that the approach is not in accordance with the provisions of the Act, and also is not in accordance with definitions of a particular specified disability. For instance, we had seen in the definitions that while physical disabilities and the other categories of disability other than visual impairment and hearing impairment have not been defined in measurable terms, the disability of visual impairment and hearing impairment have been defined in measurable terms. What does that mean? According to the Act, the specified disabilities such as physical disability, intellectual disability, which have not been defined in measurable terms, the certification or the process of examination for issuing certificate of disability for those categories of disability has to be on the basis of assessment of the degree of a given disability and not in terms of the actual measurement of disability. And for that, various indicators have been given. Whereas for the disabilities such as visual impairment and hearing impairment, the definition given is on the basis of, in the case of, for instance, visual impairment, whether you are blind or low vision or not, neither blind or nor blind, low vision, it will depend on examination of status of your vision and the parameters of vision or absence of vision, which is the part of the definition of visual impairment. Similar is the case with regard to hearing impairment, where the assessment criteria is hearing loss in terms of decibels. That is the measurement parameter unit, decibels. So they have been defined in measurable terms. Therefore, the certification process cannot be the same for physical disability and visual impairment and hearing impairment. But in the rules, form number 5, visual impairment has been clubbed with physical disability, though the definition of both the kind of disabilities are different. One is not defined in measurable terms, the other is defined in measurable terms. And the guidelines issued pursuant thereto also commits this mistake, as is in the rule. The previous guidelines, which were notified for assessment of disability after the Act, were wide notification dated 25th April 2016, wide notification number 16-23/DD-3. Now, this revised guidelines which we are discussing has now been reassessed or revised in terms of the objections raised by us and some others, but broadly by us. And those revised guidelines for assessment of disability have been issued.
wide notification dated 12th of March 2024, which we are discussing today. And the serial number of this notification is 1338 bracket E bracket close full stop. This is the Gazette notification serial number. So this is the background. So मित्रों, आपको याद होगा कि पिछले रविवार को मैंने आपसे जो चर्चा की थी उसमें बताया था कि 3 प्रावधान हैं एक्ट के जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन के संबंध में इंपॉर्टेंट हैं, और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन और सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी दिव्यांगता का प्रमाण पत्र ही पहली सोपान है अगर आप एक्ट के अंतर्गत किसी सुविधा को, किसी लाभ को, किसी अधिकार का उपभोग करना चाहते हैं। और डिसेबिलिटी की डेफिनेशंस को लेकर 3 प्राविधान इंपॉर्टेंट हैं राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट में। वो 3 प्रावधान, एक तो डेफिनेशन है पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी की, जिसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति यदि इस एक्ट में किसी भी स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी में फॉल करता है तो वो पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी होगा। स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी की डेफिनेशन जो है उसमें कहा गया है कि जो शेड्यूल में 21 तरह की डिसेबिलिटीज डिफाइंड हैं, जो उनमें से किसी एक या ज़्यादा डिसेबिलिटी के अंतर्गत आते हों डेफिनेशंस के मुताबिक, वो स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी के अर्थ में सम्मिलित होंगे। और शेड्यूल में हर एक 21 डिसेबिलिटी की डेफिनेशन दी गई, लेकिन शेड्यूल में जो डेफिनेशन है वो 2 आधारों पे की गई है, और पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज की डेफिनेशन भी उसमें भी 2 आधारों पर की गई। स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी की में शामिल होने वाले लोग जो शामिल होंगे, और उसमें ये भी कहा है कि जिन जगहों पर स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी मेजरेबल टर्म्स में नहीं बताई, डिफाइंड की गई है, जैसे फिजिकल डिसेबिलिटी में ये नहीं कहा गया कि अगर 1 उंगली होगी तो वो स्पेसिफाइड वो लोकोमोटर डिसेबल्ड काउंट हो जाएगा, 1 उंगली नहीं होगी तो। उसमें इस तरह की कोई डेफिनेट बात नहीं कही गई है, बल्कि ये कहा गया है कि मान लीजिए उसको आर्म से संबंधित कोई दिक्कत है, हैंड से संबंधित कोई दिक्कत है, तो उसमें देखा जाएगा कि उसकी पकड़ कितनी है, पकड़ में कितनी स्ट्रेंथ है। वो जब मैं आऊंगा उसकी डेफिनेशन में, कहने का अभिप्राय यह है कि अनलाइक उन डिसेबिलिटीज के जैसे विजुअल इम्पेयरमेंट है, जहां पर डेफिनेशन बिल्कुल मेजरेबल टर्म्स में डिफाइंड है, जैसे ब्लाइंडनेस की डेफिनेशन दी गई है कि उसका विजन कितना से कितना के बीच होगा, या कितने से कितने बीच होगा, या बिल्कुल नहीं होगा तो वो ब्लाइंड होगा। अगर उससे उसके बीच इससे इसके बीच होगा तो वो लो विजन होगा। जैसे, और इसमें 2 पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट हैं, विजुअल एक्विटी और फील्ड ऑफ विजन। इस स्टेटस के आधार पर तय होगा कि वो ब्लाइंड है या लो विजन है, या दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो उसको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। लेकिन रूल्स, आरपीडब्ल्यूडी रूल्स, एक्ट के प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करने के जो रूल्स फॉर्मुलेट हुए, आरपीडब्ल्यूडी रूल्स 2017, उसमें रूल 17
प्रार्थना पत्र देने के संबंध में है, रूल 18 दिव्यांगता प्रमाण पत्र के संबंध में, उसका प्रारूप क्या होगा, उसमें क्या सर्टिफाई, और 2-3 फॉर्म्स हैं डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन के रूल्स का पार्ट है। फॉर्म नंबर 5 जो फिजिकल डिसेबिलिटी और विजुअल इम्पेयरमेंट को कवर करता है, फॉर्म नंबर 6 मल्टीपल डिसेबिलिटी को कवर करता है, और फॉर्म नंबर 7 फॉर्म नंबर 5 और 6 में जो कवर्ड नहीं है उनमें से वो अनकवर्ड जितनी भी कैटेगरीज हैं उन सबको कवर करता है। लेकिन उसमें कोई अंतर नहीं है, वो सारे फॉर्म्स। फॉर्म नंबर 5 में जैसा मैंने कहा कि फिजिकल डिसेबिलिटी और विजुअल इम्पेयरमेंट को कवर करता है, जबकि डेफिनेशंस दोनों, फिजिकल डिसेबिलिटी की डेफिनेशन मेजरेबल टर्म्स में नहीं है, और विजुअल इम्पेयरमेंट की चाहे ब्लाइंड हो चाहे लो विजन, उसकी डेफिनेशन मेजरेबल टर्म्स में है। तो वहां डिग्री का कोई मतलब होना नहीं चाहिए, और अगर डिग्री करनी भी है तो डिग्री की इक्विवेलेंस देकर आपको लिखना पड़ेगा कि ये विजुअल इम्पेयरमेंट है, ये ब्लाइंडनेस है, ये लो विजन है, इस कारण, क्योंकि उसकी विजन की स्टेटस ये है। लेकिन फॉर्म नंबर 5 में वही फॉर्म फिजिकल डिसेबिलिटी के लिए भी है, वही फॉर्म विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए। तो यही गलती उस समय जो गाइडलाइंस इशू हुई उसमें भी हुई। वो गाइडलाइंस जो इशू हुई थी, जिसका मैंने इंग्लिश में भी जिक्र कर दिया है, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूं, उसका नोटिफिकेशन नंबर था 16-21/2013-DD-3, दिनांक 25 अप्रैल 2016। और एक और नोटिफिकेशन था, एंड नोटिफिकेशन संख्या 16-9/2014-DD-3, डेटेड 4 जनवरी 2018। तो ये गाइडलाइंस के विरोध में हमने कुछ बातें, कुछ ऑब्जेक्शन किए, विशेष रूप से जिनके कारण इस असेसमेंट गाइडलाइंस की वजह से डिग्री के सर्टिफिकेशन की बेसिस पे ये विजुअल इम्पेयरमेंट पे भी डिग्री की बात आ रही है, केवल विजन की स्टेटस नहीं बताई जा रही। तो हमने इस पर विरोध दर्ज किया, और इसके कारण जो फर्जीवाड़ा हो रहा था उसको उनके नोटिस में लाया। उसके कारण एक कमेटी बनी, और डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी उसने ये नई गाइडलाइंस इशू की, जिसका नंबर है, रिवाइज गाइडलाइंस हैं, सीरियल नंबर 1338 1338 ब्रैकेट ई ब्रैकेट क्लोज फुल स्टॉप, और इसकी डेट है 12 मार्च 2024। Now, with this background, we'll start the revised guidelines. And before that, let me tell you what was our prime concern. Our prime concern was that the process of examination of disability should be streamlined and should be in conformity with the definition of specified disability. In that, the major suggestion was that, like for visual impairment and hearing impairment, which have been defined in measurable terms, the certificate should also state the status of vision of a candidate, and also, if you want the degree to be mentioned, then equivalence of that status of vision to be specified, so that both things are available, and
On that basis, one could always raise objection if a given certificate is found to be fake or is apprehended to be fake. The second was that the persons holding temporary certification should not be declared entitled for the benefit, particularly with regard to the reservation in employment and education. And largely, the revised guidelines, when I participated in the consultation which was held on the draft revised guidelines. Largely, I would say, our suggestions have been incorporated, which we will see now when we discuss these guidelines. मित्रों, हमने जो आपत्ति दर्ज की थी मुख्य रूप से दो बातों पे थी। एक तो फिजिकल, मतलब जो डिसेबिलिटीज मेजरेबल टर्म्स पे डिफाइंड नहीं है और जो डिसेबिलिटीज मेजरेबल टर्म्स पे डिफाइंड है उसको समान रूप से सर्टिफाई नहीं किया जाना चाहिए, उसके लिए समान रूप का प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं होना चाहिए। और इसी क्रम में हमने कहा कि अगर आप मेजरमेंट के आधार पर जो डिसेबिलिटी डिफाइंड है सच एज, जैसे कि ब्लाइंड और लो विजन की डेफिनेशन मेजरेबल टर्म्स में है, स्टेटस ऑफ विजन के आधार पे है, जिसको नापा जा सकता है, तो वहाँ डिग्री की रेलेवेंस है ही नहीं एक्ट के मुताबिक। फिर भी अगर आप डिग्री देना चाहते हैं तो आप ये मैंडेटरी करें कि वो बताए स्टेटस ऑफ विजन क्या है मेडिकल बोर्ड, और उसके आधार पर आप इक्विवेलेंस दीजिए कि इस स्टेटस पर इतने पर डिग्री डिसेबिलिटी मानी जाएगी विजुअल इंपेयरमेंट की, ताकि दोनों चीज मौजूद हो उस सर्टिफिकेट में, तो हमको पता लगे कि कल को अगर उस पर कोई एतराज होता है उस सर्टिफिकेट पे तो देखा जा सके कि उसने किस विजन पर, किस स्टेटस पर उन्होंने सर्टिफिकेशन करके दे दिया, जो गलत था या सही था। और दूसरी मेजर बात ये थी कि हमने कहा भाई अस्थायी दिव्यांगता की स्थिति में, वो चाहे सभी के लिए है, कोई भी कैटेगरी की डिसेबिलिटी हो, ये लाभ नहीं मिलना चाहिए। पर्टिकुलरली जो रोजगार में आरक्षण का लाभ है और शिक्षा में, उच्च शिक्षा में आरक्षण का लाभ है, वो इनको नहीं मिलना चाहिए अस्थायी प्रमाण पत्रों के अलावा। परमानेंट डिसेबिलिटी की स्थिति में ही केवल ये लाभ मिलना चाहिए, और लार्जली हमारी बात को माना गया। Now we will come to the guidelines itself. And what I propose to do is that I will, what I propose to do is that I will give you two basic assessment criteria in this guideline. One, the assessment criteria with regard to physical disability, and second, assessment criteria with regard to visual impairment. And why I want to do this is that, as I said, under the definition of persons with benchmark disabilities, these are two broad categories of disabilities which have been defined in different fashion. One has been physical, for instance, physical disability has been defined, as I said, not in measurable terms. You can't say that if one does not have a leg, he will be certified as a person with locomotor disability, or if a person has any problem in the leg, he will be certified as person with disability.
or a person having any problem in the hand will be certified as person with locomotor disability or physical disability. No. In that, they will have to, the medical board will have to see. There are 3 criteria that I will come later. Whereas in the case of visual impairment, as I said, it is the status of the vision of the candidate which will determine, which will be the basis for certification of visual impairment, either blind or low vision. So I propose to just give you these 2 examples and the broad criteria given in these guidelines for these 2 types of disabilities, so that you will have a clear understanding of what these revised guidelines contain in respect of 2 different categories of disabilities and the procedure for assessment, criteria for assessment and certification of disability. तो मित्रों, मैं अब गाइडलाइन की पर चर्चा करता हूं, रिवाइज गाइडलाइंस पर। और इसमें मैं यही कहना चाहता हूं कि हम अब जो चर्चा करेंगे वो मुख्य रूप से 2 तरह की डिसेबिलिटी के संबंध में जो गाइडलाइंस हैं उस पर ही चर्चा करेंगे, ताकि आपको एक ब्रॉड एग्जाम्पल मिल सके। क्योंकि जैसा मैंने बताया था कि 2 तरह की कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटीज हैं जो डिफरेंटली डिफाइंड हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न तरीके से डिफाइंड हैं, जिनमें कोई समानता नहीं है डेफिनेशंस को लेकर। जैसे फिजिकल डिसेबिलिटी, जिसमें लोकोमोटर डिसेबिलिटी वगैरह शामिल है, उनकी डेफिनेशन के संबंध में कोई मापीय मानदंड नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि उसका आधा हाथ हो तो इतना % डिग्री, इतना ये डिसेबल्ड हो जाएगा, या 1 उंगली नहीं है तो डिसेबल्ड हो जाएगा ना। उसके क्राइटेरिया हैं और उसमें डिग्री ही एसर्टेन हो सकती है। उसकी पकड़ कितनी है, पकड़ में स्ट्रेंथ, उसके हाथ में स्ट्रेंथ कितनी है, उंगली में अगर 1 उंगली या कनिष्ठ, अभी जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि मिडिल फिंगर में उसकी पकड़ने की क्षमता कितनी है, उसमें भी अलग अलग % है डिसेबिलिटी का माना जाता है। कनिष्ठ में कितनी है वो हम देखेंगे डिटेल में। लेकिन ब्लाइंडनेस और लो विजन के या हियरिंग इम्पेयरमेंट की स्थिति में क्या है, उसका विजन का स्टेटस क्या है, उसके आधार पर नाप कर उसके आधार पर सर्टिफिकेशन होगा। इसलिए हम इसको 2 अलग अलग 2 एग्जाम्पल आपको देते हैं, उससे आप अंदाज लगा पाएंगे कि किस हद तक इस द्वारा, इस रिवाइज गाइडलाइंस द्वारा हमारी कंसर्न्स को एड्रेस किया गया है, नहीं किया गया। तो हम सबसे पहले आपको जो गाइडलाइंस हैं उस पर लोकोमोटर डिसेबिलिटी पे आते हैं। We will first deal with or apprise you with the criteria and assessment and evaluation criteria for certification of locomotor disability. इसमें सबसे पहले डेफिनेशन दी गई है, उसको मैं दोबारा नहीं पढ़ूंगा, और रखे हैं तो मैं पढ़ ही देता हूँ। I will read it. Locomotor disability means a person's inability to execute distinctive activities associated with movement of self and objects resulting from affliction of musculoskeletal, nervous system or both. तो आप देख रहे हैं इसमें भी, इस डेफिनेशन में कहीं भी मेजरमेंट नहीं है, जबकि जब लाइन की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे दोबारा से तो यू विल फाइंड, व्हेन वी रीड द डेफिनेशन ऑफ ब्लाइंडनेस, वी विल फाइंड
that it has, though this definition does not have any measurement, but the definition of blindness does have measurement of vision, both in terms of visual acuity and in terms of field vision, limitation of field vision. नाउ तो ये इन्होंने डेफिनेशन दी है लोकोमोटर डिसेबिलिटी की, जो मैंने बताया, जिसके मुताबिक किसी भी व्यक्ति की इनेबिलिटी, अक्षमता किस चीज को करने में, किसी ऐसी एक्टिविटी को जो अपने आप के मूवमेंट से संबंधित हो या किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने से संबंधित हो, उसको एग्जीक्यूट करने में अक्षमता हो, और वो अक्षमता किस कारण हो, वो अक्षमता या तो मस्कुलोस्केलेटल की समस्या के कारण हो या नर्वस सिस्टम की समस्या के कारण हो, तो वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी कहलाएगा। अब इसमें कोई मेजरमेंट क्राइटेरिया हो नहीं सकता, इसलिए डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी यहां पर दी जाती है। अब गाइडलाइंस पे आ जाते हैं। Now we come to the guidelines. Section A of these guidelines provides the criteria for evaluation of permanent physical impairment, PPI, of extremities, upper and lower extremities. So अब क्या है यहाँ पर, क्या है कि दो तरह की एक्सट्रीमिटीज हो सकती हैं, प्रॉब्लम हो सकती हैं परमानेंट रूप से फिजिकल इंपेयरमेंट में। या तो अपर पार्ट में होगी, जैसे हाथ में हो, या लोअर एक्सट्रीमिटीज होंगी लोअर पार्ट में, पैर में हो, स्पाइनल हो, it could be in legs. Upper part is hand, arm, finger. Lower part is leg, waist, spinal cord, and so on and so forth. So in this, first they have described the guidelines for evaluation of permanent physical impairment, PPI, of upper extremities. अब मैं केवल अपर का ही आपको एग्जांपल दूंगा, उससे आप अंदाज लगा सकते हैं लोअर के संबंध में भी वही बात है। अब अपर एक्सट्रीमिटीज का मतलब क्या मैंने बताया आपको, हाथ, what is the upper extremity? Upper part of the body is what? The upper part of the body is hand, etc., right? So it says the estimation and measurement shall be made when the clinical condition has reached the state of maximum improvement from the medical treatment. What does that mean? And across all disabilities, this is the principle, basic principle. Basic principle is that the assessment of any disability, including upper extremities locomotor disability, will have to be done only after and taking into account that the clinical condition has reached a stage of maximum improvement from the medical treatment. You know, after the best possible medical treatment, the situation should become such which would warrant or enable a person with locomotor disability or any kind of disability to reach
to be certified as a person with specified disability, including locomotor disability. This principle is all through. What does that mean? That A, you will have to certify that it is a permanent disability. The condition on the basis of which the medical board is declaring a person to be a person with a specified disability, in this case, a person with locomotor disability, has to come to the conclusion that even after the medical treatment, this is the stage of maximum improvement, and beyond that it cannot improve. कहने का तात्पर्य ये है, ये देखिए, चाहे लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो या कोई भी डिसेबिलिटी हो, विजुअल इंपेयरमेंट भी हो, उसके संबंध में ये सिद्धांत आपको सब जगह मिलेगा। पूरे अभी आप गाइडलाइंस में जब हम विजुअल इंपेयरमेंट में आएंगे तब भी आप देखेंगे कि डिसेबिलिटी का असेसमेंट करते समय सबसे पहली कंडीशन ये है कि मेडिकल बोर्ड को इस निष्कर्ष पर पहुंचना होगा कि जो आज उसकी स्थिति है, ये इसके बियॉन्ड मेडिकल ट्रीटमेंट से, किसी प्रकार के इलाज से उस स्थिति में कोई और सुधार नहीं हो सकता है। तभी उसी स्टेज पर असेसमेंट ऑफ डिसेबिलिटी होगा। इसका मतलब दूसरा अर्थ क्या है? दूसरे शब्दों में क्या कहा जा सकता है कि अगर कोई इलाज उपलब्ध है जिससे वो स्थिति बदल सकती है, इंप्रूव हो सकती है, तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन नहीं किया जाएगा। पहले वो इलाज हो, उसके बाद ही डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन के लिए कंसीडर होगा वो केस। तो पहली कंडीशन ये हो गई। सो दैट इज व्हाई व्हाट दे आर सेइंग, द एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट शैल बी मेड व्हेन द वर्ड इज व्हेन। इसका मतलब ये है कि उसी के बाद इस पर कंसिडरेशन होगी। When the clinical condition has reached the stage of maximum improvement from the medical treatment. उसके बाद क्या कहते हैं? It says further, normally the time period is to be decided by the medical doctor who is evaluating the case for issuing the PPI certificate as per standard format of the certificate. So, for the validity of certificate, it could be temporary certificate, it could be permanent. If doctor feels, medical board feels that the condition of a given disability is likely to improve within a span of some period or some time, then it will issue certificate, a temporary certificate of disability, stating its validity period and stating that the reassessment will take place after the said period. And the reason has also to be given for issuing that temporary certificate, that it is because of the reason that there is a possibility of improvement of his disability or condition of disability. तो जैसा मैंने कहा कि पहली बेसिक प्रिंसिपल है कि भाई मेडिकल बोर्ड को इस निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ेगा कि जो बेस्ट पॉसिबल इलाज है, उस इलाज के बाद वो स्थिति आई है जिस स्थिति में और कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता, तभी परमानेंट डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट मिलेगा। और अगर उसको लगता है कि इसमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, तो वो टेम्परेरी सर्टिफिकेट देगा। उसमें क्या लिखेगा कि उसमें गुंजाइश है कि वो
इतने पीरियड के अंदर कुछ चेंज हो सकता है उसकी डिसेबिलिटी की कंडीशन में, और इसलिए ये उस पीरियड तक वैलिड है, उसके बाद रीअसेसमेंट उसको कराना। अब now it deals with the upper extremity, and it divides the upper extremity into two components. And first is the arm component, and the second is the hand component. Arm or hand, you know what is the difference between arm and hand? Hand is entire hand. Arm is a part of hand. Now, so the assessment and certification of upper extremity has been divided into two parts, that is arm component and the hand component. And first they deal with the measurement of loss of function of arms component. And in this, what they do, what are the prime condition or prime consideration, not condition, for the medical board? One, the loss of function of arm component has to be measured on the basis of, first, the loss of range of motion. Motion means movement. What is the loss of range? What is the range of loss of motion or range of motion? Second is muscle strength. You know, in arm there are muscles, right? So what is the muscle strength? And coordinated activities. How far the coordinated activities in the function of arms have been affected because of the disability. So these three prime concerns or considerations of function of arm, that is loss of range of motion, that is movement, muscle strength, and coordinated activities. तो अपर एक्सट्रीमिटी में सबसे पहले अपर एक्सट्रीमिटी को दो भागों में बांटा, दो कंपोनेंट्स में बांटा। पहला कंपोनेंट आर्म, द आर्म कंपोनेंट, और दूसरा हैंड कंपोनेंट। आर्म का कौन सा हिस्सा, आर्म हैंड का कौन सा हिस्सा कहलाता है? वो हिस्सा आर्म का जो आर्म की सॉरी आर्म का आर्म कंपोनेंट अलग है और हैंड कंपोनेंट अलग है। नाउ आर्म कंपोनेंट का सबसे पहले इन्होंने डिटेल दिया है। तो आर्म कंपोनेंट को एसेस करते समय कि उसमें कितना इफेक्ट हुआ है, क्या क्या चीज देखनी है? तीन चीजें देखनी है। पहला, क्या लॉस ऑफ रेंज ऑफ मोशन है, मतलब उसको आर्म के मोशन की में कितनी क्षति हुई है, आर्म के मोशन के फंक्शन में कितनी क्षति हुई है। दूसरा, हमारी मसल में कितनी, उसकी आर्म की मसल्स में कितनी स्ट्रेंथ है, शक्ति है, कितनी शक्ति का क्षय हुआ है। एंड तीसरा, आर्म के फंक्शन में कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज जो
कई एक जो एक्टिविटी आम पूरे को एज ए होल को यूज करते हुए जो कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी करनी है उस पर कितना असर पड़ा है डिसेबिलिटी के कारण। ये मेजर कंसिडरेशंस 3 होंगे आर्म के कंपोनेंट को लेकर। इसी तरह से हैंड के कंपोनेंट को लेकर क्या देखा जाएगा इवेल्युएट करते समय? ये देखा जाएगा प्रीहेंशन, सेंसेशन एंड स्ट्रेंथ। प्रीहेंशन मतलब पकड़ने की क्षमता कितनी है, दबाने की। सेंसेशन मतलब उसमें कितनी संवेदना है, टच करते हैं तो आपको टचिंग सेंस कितनी है, नहीं है। स्ट्रेंथ, शक्ति कितनी है, कितनी देर तक पकड़ सकते हैं, कितना भारी ऑब्जेक्ट आप पकड़ सकते हैं। सो हैंड इज the measurement of loss of function of hand is considered on the basis of determination of the prehension, sensation and strength. अब फिर उन्होंने कहा हैंड में, जैसा मैंने कहा एक कंपोनेंट है प्रीहेंशन, एक कंसिडरेशन। तो नाउ दे से फॉर एस्टिमेशन ऑफ प्रीहेंशन, अपोजिशन, lateral, pinch, cylindrical, grasp, spherical grasp and hook grasp have to be assessed. मैंने देखा ना पकड़ने वाली बात कि अब पकड़ने में जो दूसरी, मान लीजिए एक आर्म से दूसरे आर्म की तरफ की किसी चीज को पकड़ना है, लेटरल तरीके से पकड़ना, पिंच कर पाना, सिलिंड्रिकली पकड़ पाना, स्फेरिकली पकड़ पाना, ये सब चीजें देखनी होंगी। इसी तरह से हमें ये भी देखना होगा कि ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों ही कंपोनेंट्स जो हैं, द इम्पेयरमेंट ऑफ एंटायर extremity depends on the combination of impairments of both components. That means both arm and hand components will have to be taken into account while assessing the entire extremity of extremity for declaration of impairments or level of impairments और डिसेबिलिटी। एंड देन बेसिक प्रिंसिपल, तो उन्होंने कहा कि दोनों चीजों, दोनों इम्पैक्ट, दोनों जो कंपोनेंट हैं, तत्व हैं, मतलब आर्म का कंपोनेंट और हैंड, इन दोनों को मिलाकर अपर एक्सट्रीमिटी का इवैल्यूएशन करके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन होगा। और ये तो फिर ये भी बेसिक प्रिंसिपल अगला कि तो ये बाकी तो ये इनके स्पेसिफिक थे। तो पहला बेसिक प्रिंसिपल जो सब पे लागू होगा वो मैंने बता दिया था। अब ये दूसरा आ रहा है कि टोटल डिसेबिलिटी परसेंटेज विल नॉट एक्सीड 100%। जहां परसेंटेज बताना है तो 100% से ऊपर नहीं हो सकता डिसेबिलिटी, कोई भी डिसेबिलिटी। नेक्स्ट प्रिंसिपल है कि डिसेबिलिटी इज टू बी कंसिडर सर्टिफाइड एज होल नंबर एंड नॉट एज ए फ्रैक्शन। मतलब 0.5, 0.6 नहीं बता सकते। अगर 40.5 नहीं बोल सकते, या तो 40 बोलो या 41 बोलो, फ्रैक्शन में नहीं बता सकते। यू कांट टेल इट इन फ्रैक्शंस, इट हैज टू बी कंप्लीट होल नंबर। दैट मीन्स इफ doctor wants to certify as 40.5, he will either have to say 40 or he will either have to say 41% of locomotor disability. Then next principle is disability percentage is to be stated in relation to that extremity
which has been in use in India for the past many years in the absence of a generally agreed upon system in India of reflecting disability percentage in relation with the whole body. What does that mean? That there is still no consensus in India about the about the about the reflection disability percent wise in relation with the whole body. Therefore, the way out is that you should state the disability only in relation to that extremity which you have considered for certification of the locomotor disability, not the entire body as a whole. In other words, a locomotor disability of the upper extreme has not to be certified degree wise, taking the entire body as a whole. No, it has to relate that part only on the basis of which you are certifying that disability. ना तो आप समझ गए कि यहाँ पर इंडिया में अभी कई सालों से ये कोई कंसेंसस नहीं बन पाया है कि पूरी बॉडी के रिलेशन में पूरे शरीर को एक यूनिट मानकर एक पर्टिकुलर लिम्ब या पार्ट ऑफ बॉडी में जो डिसेबिलिटी है उसको यूज करते हुए पूरी बॉडी के रेफरेंस में परसेंटेज कैसे निर्धारित किया जाए डिसेबिलिटी का। इसलिए वे आउट ये है और जो इस गाइडलाइंस में माना गया है कि आप केवल उसी पार्ट ऑफ बॉडी में एग्जिस्टिंग डिसेबिलिटी को एग्जामिन करके उसके बेसिस पर ही सर्टिफिकेशन देंगे, ना कि पूरे होल बॉडी के रेफरेंस में। Next broad guideline is that for locomotor disability, except Section C, permanent physical impairment in persons with amputation, temporary disability certificate will be issued after 6 months of symptoms. For permanent disability certificate, after 18 years of age, reassessment every 10 years should be done where requested by the PWD or recommended by a subject expert. What does that mean? That the temporary disability certificate will be issued after 6 months of the symptoms. Supposing today one meets with an accident and his hands are operated. There is no movement in the hand. Now, if this part is not mentioned in the guidelines, he could try to get a certificate of locomotor disability, which has not been allowed, because it says that that certificate will be issued, and that too temporary disability certificate, after 6 months of the symptoms.
इसके बाद मैं नाउ आई विल जस्ट गिव यू वन एग्जांपल ऑफ हाउ द आर्म upper extremity component is to be assessed in these as per these guidelines. अब मैं आपको केवल एक एग्जांपल दूंगा, फिर उसके बाद मैं विजुअल इंपेयरमेंट पे आऊंगा कि किस तरह से हमने देखा कि अपर एक्सट्रीमिटी में दो कंपोनेंट इंपॉर्टेंट हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी की, आर्म और हैंड। तो आर्म की जो अपर एक्सट्रीमिटी है उस कंपोनेंट को कैसे एसेस किया जाएगा, इसका एक एग्जांपल थोड़ा सा मैं दूंगा, उसके बाद मैं विजुअल इंपेयरमेंट कराऊंगा। टोटल वैल्यू ऑफ द आर्म कंपोनेंट असाइंड इज 90%। जैसा मैंने क्या कहा था कि आर्म और हैंड दो कंपोनेंट हैं ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटी। तो आर्म कंपोनेंट का कितना डिग्री है, कितना परसेंटेज है, उसका टोटल परसेंटेज जो असाइन किया गया आर्म को वो 90%। रिमेनिंग 10% किसके लिए है, हैंड के लिए। तो टोटल वैल्यू ऑफ द आर्म इज 90%। इस 90% के बेसिस पे आर्म की किसी भी समस्या का असेसमेंट होगा और इस 90% के लिए भी इसको डिफरेंट समस्याओं पर अलग अलग परसेंटेज दिए गए हैं, जिस पे हम आएंगे। यू नो, इट्स as I told you that there are two components of upper extremity of locomotor disability, that is arm and hand. So arm, first they are dealing with arm component in the category of upper extremity, and in that the total value of the percentage of this component has been assigned for upper extremity 90%, which means 10% is left for hand component. Now, how this 90% is to be further assigned, and what is the, and you remember in arm component there were three considerations. One was range of motion. What is the range of your movement of? So range of motion was one of the three considerations. So first they deal with this range of motion. And in that, they first deal with the principles of evaluation of range of motion of joints. जॉइंट्स आप जानते हैं, जैसा मैंने कहा था कि आर्म्स और हैंड दो कंपोनेंट थे। तो आर्म कंपोनेंट पे वो पहले दिशा निर्देश हैं पहले आर्म कंपोनेंट को लेकर, और उसमें आर्म कंपोनेंट के लिए 90% परसेंटेज रखा है। जब असेसमेंट होगा तो असेसमेंट के लिए 90% आर्म कंपोनेंट को दिया गया है। और आर्म कंपोनेंट में भी कई चीजें देखनी है। तो सबसे पहले आर्म कंपोनेंट में किस संबंध में प्रिंसिपल है, जॉइंट्स। आर्म कंपोनेंट का, और उसमें भी जो सबसे पहला था, आपको याद होगा कि आर्म कंपोनेंट में थ्री कंसिडरेशंस थी, और उसमें सबसे पहले थी रेंज ऑफ मोशन। तो रेंज ऑफ मोशन में अब अलग अलग पार्ट को आर्म के उस पर बात कर रहे हैं। रेंज ऑफ मोशन ऑफ जॉइंट्स आप जानते हैं, जो जोड़ हमारी बॉडी में जोड़ हैं, जॉइंट्स हैं जगह जगह हर पार्ट में। तो उन जॉइंट्स का मोशन का रेंज क्या है, उसके आधार पर इवैल्यूएशन किया जाएगा अगर किसी को आर्म कंपोनेंट में डिफिकल्टी है। तो द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम रेंज ऑफ मोशन इन द आर्म कंपोनेंट असाइंड इज 90%। तो मैंने कहा, पहले बताया था आपको कि इस आर्म कंपोनेंट के लिए टोटल वैल्यू कितनी है आर्म कंपोनेंट की, 90%। तो इस 90% में
इस 90% का फर्दर सब डिवीजन हुआ, फर्दर डिवीजन हुआ। वो किस तरह से है? द वेटेज एज गिवन टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ different joints is as mentioned below. Now, as we have seen that the total value of arm component is 90% for upper extremity of disability. And this 90% has further been divided in different components or dealing with different parts of the arm. And first part of the arm which has been dealt with in this guideline is joints. Joints in the arms. Now, the weighted average out of this 90% given to involvement of different joints is given as under. First, they say shoulder. Shoulder means कंधा. कंधे में ज्वाइंट्स होते हैं ना, आर्म का हिस्सा है. तो शोल्डर इज इक्वल टू अप टू 20%. एल्बो, दूसरा हिस्सा कौन सा है? एल्बो का. तो कंधा की वैल्यू कितनी है 90% में से? 20% कंधे के ज्वाइंट्स की. एल्बो, द ज्वाइंट ऑफ एल्बो और एल्बो एज ए होल, what is the value? 20% out of 90% which has been assigned to arm component. So कोनी की कितनी है? 20%. कंधे की कितनी है? 20%. रिस्ट की कितनी है? 10%. रिस्ट has been assigned 10%, up to 10%. This is maximum. In fact, all this is maximum, right? And hands की कितनी है? Up to hands 40%. Further, so now the calculation is done depending upon the extent of involvement: mild, less than 1/3, moderate, up to 2/3, or severe, almost total. So if it is mild, what is the basis of calculation? If it is mild, it is only less than 1/3. If it is in any of them, right? If supposing the effect of effect in shoulder is in fact the total value is 20%, right? But if shoulder is affected mildly, it is a mild affection, there is a mild effect on the shoulder, in the shoulder joints, then in the case of mild, what is this? Less than 1/3. So what is 1/3 of 20? That is has to be calculated. If it is moderate, it would be up to 2.3. And if it is severe, it is total, that means 20. And then it says if more than one joint of the upper extremity is involved, the loss of percentage in each joint is calculated separately as above and then added together. There could be issues with regard to different joints. There would be a problem in shoulder, there would be a problem in elbow. Then what will happen? In that case, you will calculate the effect of each joint separately and then take them or add them together and come to the grand total.
On that basis, you will define the degree of disability of that person. तो अगर मान लीजिए ये जो लेवल है, इफेक्ट जिस लेवल पे, जिस स्तर पर इफेक्ट हुआ है डिफरेंट जॉइंट्स में, उनका उन्होंने बता दिया, रेंज बता दी जो अभी हमने डिस्कस की, शोल्डर 20%, एल्बो 20%, एल्बो 20%, रिस्ट अप टू 10%, हैंड्स अप टू 40%। लेकिन इसका मतलब यह है कि ये मैक्सिमम है। अब किस तरह से आप असेसमेंट करेंगे और किस तरह से ग्रेडेशन करेंगे और किस तरह से डिग्री निकालेंगे। तो अगर मान लीजिए किसी जॉइंट की पर जो प्रभाव है वो माइल्ड है, हल्का सा है, तो उसको कितने परसेंटेज देंगे आप? 1/3% से कम। अर्थात मान लीजिए शोल्डर में प्रॉब्लम है तो 20%, 20% दिया है उसको शोल्डर को, और माइल्ड प्रॉब्लम है शोल्डर में केवल, तो 20 का 1/3, लेस देन 1/3 ही आप डिग्री मानेंगे उसमें। और मॉडरेट है 2/3% के तक, तो 20 का 2/3, और सीवियर है तो पूरा का पूरा दे देंगे, अर्थात 20%। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि किसी के एक जॉइंट से ज्यादा जगहों पर प्रॉब्लम है, शोल्डर में भी है, रिस्ट में भी है, या शोल्डर में भी है, एल्बो में भी है। तो उस स्थिति में क्या होगा? इसी प्रिंसिपल के आधार पर हर जॉइंट की स्थिति का आप मूल्यांकन करेंगे अलग से, और उसकी डिग्री एसर्टेन करने के बाद उन सबको जोड़कर एक साथ ग्रैंड टोटल के आधार पर डिग्री सर्टिफिकेशन, डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफाई करेंगे। इसी तरह से ये तो पहला कंपोनेंट था, रेंज ऑफ मोशन। पहली कंसिडरेशन थी, 3 कंसिडरेशन मैंने बताई थी, रेंज ऑफ मोशन। दूसरी कंसिडरेशन क्या बताई थी? अपर एक्सट्रीमिटी की स्ट्रेंथ ऑफ मसल्स। अब इसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ मसल्स का इवेल्युएशन आप कैसे करेंगे? हाउ विल यू इवेल्युएट स्ट्रेंथ ऑफ मसल्स? स्ट्रेंथ ऑफ मसल्स कैन बी tested by manual method and graded from 0 to 5 as advocated by Medical Research Council, London, UK, depending upon the strength of the muscles. Appendix 1. So Appendix 1 they have given. Now they give, then they go on to give the percentage for loss of muscle power. And in that, first is the mean percentage of loss of muscle strength around a joint is multiplied by 0.30. The mean percentage of loss of muscle strength around a joint is multiplied by 0.30. If loss of muscle strength involves more than one joint, the mean loss of percentage in each joint is calculated separately and then added together as has been described above for loss of range of motion. Right? So same principle will apply. You first see what is the mean of percentage of loss of muscle strength around a joint and multiply it with 0.30. And for each such loss, you measure it separately, and based on that measurement, after doing that measurement, you reach a total number, and on that basis, you decide to certify disability. इसी तरह मसल स्ट्रेंथ के संबंध में इसमें कहा है दूसरा कि भाई आप उसको मैनुअल मेथड से टेस्ट करोगे
और जो इसको आप 0.5 के ग्रेड पे रखोगे मसल स्ट्रेंथ के लॉस को, और उसको किस तरह से आप परसेंटेज वाइज कैसे करोगे, मीन परसेंटेज जो है 0.0 से 5% के बीच मिनिमम 0 होगा और मैक्सिमम 5 होगा, 5%। तो उसका मीन परसेंटेज निकाल लो। अगर आप 4% मानते हो लॉस ऑफ मसल स्ट्रेंथ, तो 4% को डिवाइड कर दो, सॉरी मल्टीप्लाई कर दो 0.30 से। और अगर एक जगह से, एक जॉइंट से ज्यादा जॉइंट में मसल स्ट्रेंथ का लॉस हुआ है, तो जैसे जॉइंट्स के लिए कैलकुलेशन की बात थी कि हर लॉस को सेपरेटली पहले एसेस करके उसके परसेंटेज निकाल लो, और उसके बाद सभी लॉस को का टोटल कर दो, उसको डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी पर रीच मान लो। तीसरी कंसिडरेशन कौन सी थी? तो पहली थी रेंज ऑफ मोशन, दूसरी थी दी मसल स्ट्रेंथ, और तीसरी कौन सी थी? कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज, इवेल्युएशन ऑफ कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज। कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज the percentage assigned to the value of percentage assigned to coordinated activity is total 90%. And in this 90% has further been divided into 10 different coordinated activities as has been given in Form A, Appendix 2, assessment pro forma for upper extremity. So 10 activities, different activities, coordinated activities have been made the basis for assessment of evaluation, or for evaluation or assessment of coordinated activities. So 10 activities have been identified, and those 10 activities and the evaluation thereof has been given in Form A, Appendix 2 of these guidelines. I will not go into the details of this. And this 90% has been, as we have seen, that there are 10 different coordinated activities which have been defined for assessment of 90% value in respect of difficulty in coordinated activities. And each of the 10 activity has been given a weightage of, or assigned a value of 9%. 10 multiplied by 9 makes it 90. तो इसमें क्या कहा उन्होंने कि 10, तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन क्या थी अपर एक्सट्रीमिटी में? वो थी कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज में डिफिकल्टी, और टोटल वैल्यू परसेंटेज टर्म्स में, प्रतिशत के आधार पर टोटल वैल्यू इस कंपोनेंट को, इस कंसिडरेशन को दिया गया 90%, और इस हेतु 10 कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज को रिकॉग्नाइज किया है, जो फॉर्म ए अपेंडिक्स 2 में इस गाइडलाइंस के मेंशन्ड हैं। और हर प्रत्येक 10 एक्टिविटी, इन 10 एक्टिविटीज में प्रत्येक को 9% वैल्यू असाइन की गई। इसके आधार पर इनका वो असेसमेंट होना है। इसके बाद आप किस तरह से
वैल्यू कंबाइन करोगे आर्म कंपोनेंट की, the total value, how will you combine the values of arm component? The total value of loss of function of arm component is obtained by combining the value of loss of ROM, muscle strength, and coordinated activities using the combining formula A plus B 90-90. What does that mean? That means that in order to certify as to whether an applicant falls within the definition of locomotor disability having upper extremity problem, particularly with reference to the arm component, the values have to be combined with reference to the total value of functions of arm component, which is obtained by combining the value of loss of ROM, that means the first consideration, which was range of movement, value of muscle strength, second consideration, and third, the value of difficulty in coordinated activities, right? So on that basis, this certification has to take place. And I will not give you next example of hand component, because I have probably given you a broad idea of the method on which the locomotor disability having upper extremity problem in the arms, I have been able to explain, so that you may now, when we come to the visual impairment, you may be able to understand the difference between both of it. तो दोस्तों, जो फाइनल सर्टिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी, लोकोमोटर डिसेबिलिटी अपर एक्सट्रीमिटी में जो प्रॉब्लम है, मतलब आर्म कंपोनेंट में, जिसकी चर्चा अभी तक हम कर रहे थे, उसका फाइनल रिजल्ट कैसे बने, उसके लिए इन्होंने कहा है कि आर्म कंपोनेंट के जो ऊपर के जितने भी असेसमेंट क्राइटेरिया थे डिफरेंट कंपोनेंट्स में, 3 कंसिडरेशंस के आधार पर, जैसे रेंज ऑफ मूवमेंट, स्ट्रेंथ ऑफ मसल्स, मतलब आपकी जो आर्म की मूवमेंट करने की, हिलने डुलने की जो रेंज है, किस सीमा तक होता है वो हिलने डुलने का आर्म्स का, क्या इस मसल की स्ट्रेंथ है, आपके मसल्स की, आर्म के मसल्स की स्ट्रेंथ क्या है, और साथ ही जो 10 कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए जो असाइंड वैल्यूज़ हैं, उसके आधार पर जो आपके असेसमेंट से क्या स्थिति बन रही है, क्या टोटल सम आ रहा है, उसको सबको टोटल करके ही आप मेडिकल बोर्ड इस डिसीजन पर निकलेगा कि कोई लोकोमोटर डिसेबिलिटी की डेफिनेशन में आता है कि नहीं आता है। तो ये मैंने आपको एक लोकोमोटर डिसेबिलिटी की एक ब्रॉड असेसमेंट क्राइटेरिया समझाया एक एग्जांपल से। वैसे तो अभी और बहुत है, बहुत डिटेल्ड है, लेकिन मैं समझता हूँ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना काफ़ी है। और इसलिए इसलिए भी ये काफ़ी है कि हमको अब उसकी ओर जाना चाहिए, विजुअल इम्पेयरमेंट की ओर, ताकि आप ये समझ सकें कि किस तरह से डिफरेंस दोनों चीज़ों में है। अब हम नाउ वी विल गो
to the criteria for the assessment of visual impairment, which is the second section, and which is in fact in section 19A. We start from section 19A in fact. And first they give the definition of visual impairment. And I will repeat it for the purpose of clarity of thought and understanding. Visual impairment, as you know, is divided into two subcategories, that is blindness and second is low vision. Now, first is the definition of blindness as has been given in the schedule to the Act. Blindness means a condition where a person has any of the following conditions after best correction. Mind this word, after best correction, because this has also come in the guidelines. And this is the basic principle for any disability certification. First is total absence of sight, complete absence of sight. Second is visual acuity not less than 3/60 or less than 10/200 by Snell's chart in better eye with best possible correction, or limitation of field of vision subtending an angle of less than 10 degree in better eye. So what does that mean? That A, the examination of status of vision in the case of blindness or low vision, in fact, both, A has to be done in relation to the better eye after best possible correction. 2, what could be the position, what is the parameter or prime factor on which the assessment has to be done? What is the status of vision? And the status of vision has to be in relation to, first is immaterial because there is no dispute on that. If one has total absence of sight, is blind, no problem. Second criteria, one may have some vision. Now, what should be seen by the doctor? The doctor has to see what is the visual acuity. If visual acuity of an applicant is less than 3/60 or less than 10/20 by Snell's chart in better eye with best possible correction. So first criteria is what is his visual acuity. If he has visual acuity within this criteria or within this parameter, then he is blind. Or there may be no problem in the visual acuity, but there may be problem in limitation of field of vision subtending an angle of less than 10 degree in better eye. So better eye has to be seen, not the worst eye. Now, low vision has been defined to mean a condition where now here again, those are two considerations where a person has any of the following conditions. Visual acuity again is the parameter, less than 6/18 or 20/60 up to 3/60 or 10/200 by Snell's chart in the better eye with best possible correction.
or limitation of field. Again, second consideration is limitation of field vision subtending an angle of less than 40 degree up to 10 degree in better eye. Refer to table number 1. They are referring to table, which we will come little later. So friends, तो आपने देखा कि डेफिनेशन जो ब्लाइंडनेस की डेफिनेशन है या लो विजन की, उसमें 3 बातें बहुत ध्यान रखने वाली। एक तो स्टेटस ऑफ विजन को देखना है, और स्टेटस ऑफ विजन को देखते हुए 2 चीजों को देखना है कि विजुअल एक्यूटी क्या है या लिमिटेशन ऑफ फील्ड विजन क्या है। और ये सब जो देखना है बेटर आई में देखना है, और वो भी बेस्ट पॉसिबल करेक्शन के बाद देखना है। बेस्ट पॉसिबल करेक्शन का मतलब क्या? मान लीजिए किसी को कैटरेक्ट है और कैटरेक्ट के कारण उसकी जो विजन है, एक्विटी ऑफ विजन है, मान लीजिए वो लो विजन के अंतर्गत या ब्लाइंडनेस के अंतर्गत आ रही है, लेकिन वो कैटरेक्ट जो है वो ट्रीटेबल है, उसका इलाज हो सकता है। तो इलाज हो सकता है, तो उसको नहीं, बिना इलाज के उसको डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, सर्टिफाई नहीं किया जाएगा। अगर इलाज भी हो गया और वो चश्मा लगाता है या लेंस आजकल लोग पहनते हैं, तो बेटर आई में लेंस लगाकर भी अगर उसकी विजन इस स्तर तक की है, इसी के अंतर्गत है फील्ड ऑफ एक्विटी ऑफ विजन या फील्ड ऑफ लिमिटेशन ऑफ फील्ड ऑफ विजन, इन पैरामीटर्स पे खरी उतरती, तभी वो सर्टिफाई किया जा सकता है। इसका दूसरा second part of this guideline is what is the nature of certificate. The medical authority will decide whether status of disability is temporary or permanent. जो बात मैंने कही थी, ये हमारे ऑब्जेक्शन में थी कि नेचर ऑफ सर्टिफिकेट किस तरह से होगा। पहले मेडिकल अथॉरिटी ये डिसाइड करेगी, व्हाट विल द मेडिकल अथॉरिटी डिसाइड, whether disability is temporary or permanent. For instance, I gave you the example of cataract. Cataract is treatable. So, if one goes for disability certification of blindness or low vision and he has cataract, the medical authority may decide to give him a temporary certificate, subject to the condition of reassessment of after cataract surgery. And in this case, after having decided whether that disability is temporary or permanent, what is he required to do? Disability certificate should be issued only in case of permanent disability. This has come in the case of visual impairment. And reasons for it. Cataract is very common nowadays, but it is treatable. That is why, based on our suggestion, the disability certificate for visual impairment will be issued only in case of permanent disability. The benefits like reservation in employment, education, etc., should be restricted to permanently disabled persons only. A permanently disabled person whose condition is likely to change in future
should be reassessed. The temporary disability certificate shall be issued for visual disabilities when the visual disability is only due to cataract and CSCR, that is central serous cryo choreo retinopathy. This is some problem of visual impairment. So only permanent. So what it says that in the case of visual impairment, only permanent certificate has to be issued. If medical authorities come to the conclusion that visual disability falls within the category of permanent disability, there is no chance of improvement even after best correction, then the permanent disability certificate could be issued. But in the case of persons who are having cataract or this CSCR, the doctor may issue temporary certificate, but it will not give them a right for availing the benefit of reservation, either in employment or in the reservation in higher educational institutions. तो आपने देखा कि विजुअल इम्पेयरमेंट के केस में 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हमारे सजेशन को मानते हुए इसमें इंक्लूड की गई। पहले तो मेडिकल अथॉरिटी को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये स्थायी है या टेम्परेरी है। केवल जब ये कंक्लूजन हो कि ये स्थायी है विजुअल इम्पेयरमेंट, तभी सर्टिफिकेट इशू करेगा, परमानेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू करेगा, और परमानेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ही आपको रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट या रिजर्वेशन इन हायर एजुकेशन का लाभ दिला सकता है। टेम्परेरी सर्टिफिकेट इशू अगर करना है तो वो मेडिकल बोर्ड केवल कैटरैक्ट या CSCR के केस में करेगा, और ये डिजीज है CSCR, जिसको कहते हैं सेंट्रल सीरस कोरियो रेटिनोपैथी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चेंज हुआ है। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। उन्होंने कहा है कि विजुअल इम्पेयरमेंट सर्टिफिकेशन क्राइटेरिया एंड ग्रेडेशन विजन असेसमेंट should be done after best possible correction, medical, surgical, or usual conventional spectacles. This I have already explained, that the better eye has to be taken into account for assessment, and that better eye should meet the criteria of visual impairment after best possible correction, which includes medical, surgical, or usual conventional spectacles. तो बात जो मैंने पहले भी बताई आपको, दोबारा से इसमें एम्फसाइज की गई है कि विजुअल इम्पेयरमेंट का जो प्रमाण पत्र है, उसका जो आधार है, क्राइटेरिया है उसको इशू करने का, और ग्रेडेशन का, विजन असेसमेंट का, वो बेस्ट पॉसिबल करेक्शन, चाहे वो मेडिकल ट्रीटमेंट हो, सर्जिकल इंटरवेंशन हो, या यूजुअल कन्वेंशनल जो ट्रेडिशनल स्पेक्टिकल्स वगैरह हैं, चश्मे वगैरह, उसको लगाने के बाद बेटर आई में उसके आधार पर ही करना होगा। The ophthalmologist shall circle the vision status and the percentage impairment and mark the disability category accordingly as under. तो अब ये देखिए, इसमें ये भी कहा है कि ऑप्थेल्मोलॉजी को
ये असेसमेंट करते समय दोनों काम करने होंगे। उसको बताना होगा सर्कल द विजन स्टेटस, दृष्टि का स्तर क्या है, ये उसको लिखना पड़ेगा। और साथ ही उसके आधार पर जो यहाँ पर ग्रेडेशन दिया है, उसके आधार पर उसका परसेंटेज ऑफ इंपेयरमेंट क्या है। अभी हम इसमें अब आपको दिखाते हैं। देखिए, अब इन्होंने यहाँ पर ग्रेडेशन भी दिया है और विजन स्टेटस को लिंक करके। व्हाट दे हैव डन, बेटर आई बेस्ट करेक्टेड, वर्स आई बेस्ट करेक्टेड, परसेंटेज इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटी कैटेगरी। सो विजुअल एक्यूटी, ठीक है, विजुअल एक्यूटी 6/60, 6/6 to 6/18, 6/6 to 6/18 in the best eye after best correction. If visual acuity is 6/6 to 6/18 in the better eye after best correction, and in the worst eye 6/60, no, sorry, visual acuity to between 6/6 to 6/18, 0%, 0%. So percentage is given 0 in that situation. Next is 6/24 to 6/24 to 6/60, 10% plus 0%. Less than 6/60 to 3/60, 20%. In less than 3/60, no light perception, 30%. One-eyed person, so he will be considered one-eyed person. So one-eyed person will also be 30%, and less than 3/60, no light perception, 30%. One-eyed person is also 30%. Visual acuity is 6/24 to 6/60, or visual field less than 40 degrees up to 20 degrees around center of fixation, or hemianopia involving macula, 6/24 to 6/60, 40%, a low vision. So this will come within the definition of low vision, which is that 40% comes here now. And in that case, what should be the vision status? Visual acuity 6/24 to 6/60, or it is not and, or visual field less than 40 degrees up to 20 degrees around center of fixation, or hemianopia involving macula, 6/24 to 6/60, 40%, and this will fall in the category of low vision. Next is less than 6/60 to 3/60, 50%, and it will also fall in the low vision category. That means the vision status having less than 6/60 to 3/60, their disability will be graded as 50%, and their category will be low vision. Mind you, up to 90% it is all low vision. Then less than 3/60 to no light perception,
60%. Again, this is low vision. If one has visual acuity between 3 by 6, less than 3 by 60 to no light perception, 60%, and it is low vision. Visual acuity less than 6 by 60 to 3 by 60, or visual field less than 20 degrees up to 10 degrees around center of fixation, less than 6 by 60 to 3 by 60, 70%, again low vision. Then less than 3 by 60, no light perception, 80%, low vision. Visual acuity less than 3 by 60 to 1 by 60, or visual field less than 10 degree around center of fixation, less than 3 by 60 to no light perception, 90% a blind. Now at 90% blind would be declared. And what would be the status of the vision? The status of the vision would be visual acuity less than 3 by 60 to 1 by 60, or visual field less than 10 degree around center of fixation, less than 3 by 60 to no light perception, 90% a blind. Visual acuity only HMCF, only light perception, no light perception, only HMCF, only light perception, no light perception, 100%. That is blind. So we have seen that the entire status of field vision has been given a certain gradation of percentage of degree of disability, and up to, based on the, and this has been, it is not degree simpliciter, degree of disability simpliciter, it is based on the status of vision, either in terms of acuity of vision or in terms of limitation of field vision, right? So on that basis, different gradations have been given, which is in consonance with the definition of disability, visual impairment given in the Act, and the up to 90%, I mean less than 90% gradation falls within the definition of low vision, and 90% and above up to 100% falls within the definition of blindness. But again, the certification or gradation is based on the status of the vision in the better eye after best possible correction. तो आपने देखा कि ये जो क्राइटेरिया रखा है, इसमें इन्होंने डिफरेंट, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि वो इंग्लिश में जो मैंने पढ़ा है वो उसमें मतलब विजन का स्टेटस दिया है, वो टेक्निकल है, लेकिन इतना ही आप समझें कि जो विजन का स्टेटस है और जो डेफिनेशन एक्ट में दी गई है ब्लाइंडनेस की या लो विजन की,